Good morning, all of you. Hope you all are fine, beta. Let's move on to next chapter. That is chapter number 4, Father's Help by R.K. Narayan, bache. Now, beta, have you ever experienced Monday morning blues while going to school after an enjoyable weekend? Weekend is your Saturday, Sunday, and at times you feel like not going to school. And Monday morning blues are those tensions that occur in your mind that how to, and you plan how to avoid school. Okay, so after that, I mean, spending good time, and you want to just have a bunk from the school, that you pretend not to go to school by making so many excuses to your parents that maybe there is no important lesson today, all the teachers are absent today, there is some competition day today, some seminar is there, so there will be no study at all, like this. And suppose you do not wish to go to school someday, do you pretend to have a headache? आप कहते हो हेडेक है. एट टाइम्स आप क्या करते हो, होल्ड तो करते हो स्टमक को और बोलते हो सिर दर्द है, हेडेक हो रहा है. टेल योर पेरेंट्स दैट यू डू नॉट हैव एन इंपॉर्टेंट क्लास. आप कहते हो मेरी कोई इंपॉर्टेंट क्लास ही नहीं है. टेल योर पेरेंट्स द ट्रुथ. कई बार बोलते हैं मेरा मन नहीं है जाने का. सो इफ़ यू टेल द ट्रुथ टू योर पेरेंट्स, एंड डू योर पेरेंट्स अलाउ यू टू स्टे एट होम? Very rarely, bache. Very rarely they allow you to stay at home. Make some other excuse that teacher is going to punish me because I have not done the work. Maybe there is some seminar is there, some competition is there, like this. Okay. Now read the following story about Swaminathan, whose excuse for not going to school lands him into trouble. जिसने ये क्या कहता है कि उसको excuse बनाना था कि मुझे school नहीं जाना, how to avoid school, so he made an excuse and which landed him in some problem, जो उसे problem में फंसा गया. Lying in bed, lying मतलब बेटा लेटे हुए बेड में, स्वामी realized with a shudder all of a sudden that it was Monday morning. उसे दिक्कत जाने का, आज तो Monday morning है. It looked as though only a moment ago it had been the last period on Friday. ऐसा लग रहा था कि last period था Friday का, उस एक moment पहले ही. Already Monday was here और अब एकदम से Monday आ भी गया. He hoped that an earthquake would reduce the school building to dust. वो चाहता तो यही था कि क्या हो जाए कि एक अर्थक्वेक आए और क्या हो जाए, उस पर मिट्टी, हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो मिट्टी में मिल जाए. बट दैट गुड बिल्डिंग एल्बर्ट मिशन स्कूल, कहते वो अच्छी बिल्डिंग एल्बर्ट मिशन स्कूल, दिस इज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर स्वामीनाथन यूज टू स्टडी, हैड विथस्टूड सिमिलर प्रेयर फॉर ओवर 100 years नाउ. कहते ऐसे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा कि क्या हो जाए, ऐसे क्या हो जाए, भूकंप आए और हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो उसमें मिट जाए, ना होगा स्कूल, ना हमें स्कूल जाना पड़ेगा. ऐसी प्रेयर्स बच्चे अक्सर करते हैं. और मतलब अगर जो बहुत सारे सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो कितनी प्रेयर्स भगवान जी को मिली होंगी ना इस तरह की. एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, ही क्राइड विद पेन. वेल्ड का मतलब होता है क्राइड विद पेन. आई हैव अ हेडेक. उसने क्या कहा कि मुझे हेडेक है. हिज मदर सेड व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल इन अ जुटका. बेटा रिक्शा को जुटका कहा जाता है. कि आप क्यों ना तुम एक रिक्शा में तो स्कूल चले जाओ, सो दैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट द अदर एंड. कहते ताकि मैं क्या कर जाऊँ, मैं मर ही जाऊँ गुटका में जाके स्कूल. हाउ कैन अ पर्सन डाई वाइल गोइंग टू स्कूल इन अ रिक्शा. सी हैव यू एनी आइडिया वॉट इट मीन्स टू बी जॉल्टेड इन अ झटका. कहते कि एक रिक्शा में जाना और उसमें झटके लगना कितना कितना हेडेक हो सकता है मुझे उसकी वजह से, तो मैं मर ही जाऊँ क्या दर्द से. हैव यू मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे. नाउ एज मदर्स हैव सिंपैथेटिक एटीट्यूड, so mother wanted to know if he was having any important lesson in the school on that day. ओके. इम्पॉर्टेंट वाह, यानी वाह मतलब अरे आप इम्पॉर्टेंट की बात करते हो, क्या इंपॉर्टेंट लेसन है. दैट जोग्राफी टीचर हैज़ बिन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर अ ईयर नाउ. कहते जोग्राफी टीचर जो है वो पूरे साल से हमें कम से कम एक लेसन पढ़ा रहा है. व्हाट अबाउट द अदर चैप्टर्स देन, what about the pending syllabus then? And we have arithmetic, it's mathematics को arithmetics कहते हैं बेटा, आपको पता ही होगा वो तो. which means for a whole period we are going to be bitten by the teacher important lessons. कहते हैं मैथ्स के पीरियड में बस टीचर से हम मार खाते जाते हैं और आप कहते हो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं. And mother generously suggested Swami might stay at home. So mother, she had a sympathetic attitude, so she believed Swaminathan and allowed him to stay at home. At 9:30, when he ought to have been shouting in the school prayer hall. Beta, look at the word shouting. You recite prayers basically, but look at the word. He has disrespect for his teachers, for his school,
and towards prayer hall also. Swami was lying on the bed in mother's room. Now he was lying in mother's room. Father asked him, see, beta, he was not lying in bed, rather, he was lying on bench. Now, father asked him, have you no school today? Now, father inquired Swami that if he was not having any school that day. Headache, Swami replied. See, even he was not showing respect to his father. He should say headache father like this, you know. But he simply said headache. Nonsense. Dress up and go. Now the father, on listening about Swami's excuse that he was having headache, he said nonsense. That is unbelievable, and ordered him to dress up and go to school immediately. Headache. Loof about less on Sundays and you will be without a headache on Monday. Loof about रोम लेस रोम क्या होता है इनकी घूमना फिरना अपना संडेज को कम कर दो तो मंडे को तुम क्या हो जाओगे बिना सिर दर्द के होगे स्वामी न्यू द स्टबन हिज फादर कुड बी एंड चेंज हिज टैक्टिक्स अब कहते हैं स्टबन का मतलब होता है बेटा जिद्दी कहते कि उस जो जानता था कि मेरे फादर कितने ज़िद्दी हैं तो उसने कहा कि क्यों ना मैं अपना तरीका बदलूँ आई कैन नॉट गो सो लेट टू द क्लास नाउ ही टोल्ड दैट मैं वो कभी क्लास में लेट नहीं जा सकता स्वामीनाथन ने ऐसा कहा आई एग्री बट यू विल हैव टू इट्स योर ओन फॉल्ट कहते मैं जानता हूँ इस क्लास में जाना अच्छी बात नहीं है लेट आना बट नाउ इट इज़ योर ओन फॉल्ट यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर टेकिंग अ लीव अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना तो तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे what will the teacher think if I go so late? Now, Swami was pleading his father that if I go late to the school, what will my teacher think about me? Tell him you had a headache and so are late. उनको बता देना कि तुम्हारा headache था तभी तुम लेट आए हो. He will beat me if I say so. अगर मैंने उनको ऐसा कहा तो वो मुझे मारेंगे. Will he? Father was inquiring. सच्ची में मारेंगे? Let us see. Father took this behavior of teacher as a challenge. What is his name? Now the father wanted to know the name of the teacher. Samuel. Does he beat the boys? कहते क्या वो लड़कों को मारता है? ही इज़ वेरी वायलेंट स्पेशली विद बॉयज़ हु कम लेट कहते हैं हाँ वो मारता है स्पेशली उन बॉयज़ को जो क्लास में लेट आते हैं सम डेज अगो अ बॉय वॉज मेड टू स्टैंड ऑन हिज नीज फॉर अ होल पीरियड इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही केम लेट कहते एक दिन एक बच्चा क्या हुआ क्लास में थोड़े दिन पहले की बात है कि वो एक बच्चा क्लास में लेट आया तो पूरा पीरियड कोने में उसको नीज के घर खड़ा होना पड़ा अपना बिकॉज ही क्योंकि वो लेट आया एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 cuts फ्रॉम द केन एंड हैविंग हिज ईयर ट्विस्टेड कहते हैं उसको ना सिर्फ पर ये नीज पे खड़े होने की पनिशमेंट मिली बल्कि उसे 6 कट्स भी लगे केन से केन क्या होता है डंडे से उसको मार पड़ी 6 कट भी लग गए उसके आर्म पे पाम पे एंड देन हैविंग हियर इज ट्विस्टेड और टीचर ना से उसके सिर्फ और कान भी मरोड़े आई वुड नॉट लाइक टू go late to Samuel's class and now Swami said that he does not want to go late to Samuel's class if he's so violent why don't tell your headmaster about it कहते अगर वो इतना ही क्या है मारता है तो क्यों ना तुम लोग टीचर्स को हेडमास्टर को कंप्लेन करते हो बेटा नाउ देयर इज यू शुड नो who is an headmaster you have principal in your school see beta the schools who are affiliated till 10th class जहाँ पे 10th क्लास तक बच्चे होते हैं दो schools have headmaster and those schools who are affiliated till 12th class up to 12th class they have principals so now why not to complain to the headmaster they say that even the headmaster is afraid of him can you believe ever that headmaster is afraid of any of the teacher whereas I consider headmaster is the boss and the teachers are the subordinates, assistants over there. He is such a violent man. So everyone is having fear of Samuel. Even the headmaster is afraid of Samuel. And then Swami gave a lurid account of Samuel's violence. Lurid hota hai beta, shocking account of Samuel's violence. How when he started caning he would not stop till he saw blood on the boy's hand कहते कि जैसे ही वो इतना शॉकिंग अकाउंट दिया कि अगर सैम्यूल मारना शुरू करता है केन से जब तक वो मारता रहता जब तक कि वो बॉय के हैंड में ब्लड ना देख ले विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फोरहेड लाइक अ वर्मिलॉन मार्किंग जिससे कहते हैं ना कि और उससे वो क्या करता था कि वो बॉय के फोरहेड पे लिख देता था उससे नेम लिखवाता था कि कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख देता था लाइक आई एम थीफ आई हैव कम लेट टू द क्लास लाइक दिस
Swami hoped that with this his father would be made to see that he could not go to the class late. कहते स्वामी ने उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने इतनी शॉकिंग अकाउंट दे दिया टीचर का that father will be convinced not to send me late to the school. But father's behavior took an unexpected turn. Rather than allowing him to stay at home, father took it as a challenge. He became excited now. The father was very excited. What do these swine mean by beating our children? Swine होता है बेटे pig. कहते कैसे ये लोग इतने गंदी तरह हमारे बच्चों को मार सकते हैं. They must be driven out of the service. उनको नौकरी से बाहर निकालना चाहिए. I will see what he's going to do with my child. Like this बच्चे. Now we are going to do further reading of the chapter in the next class. Till then, take care of yourself. Enjoy the chapter. Read yourself बेटा ahead. आपको बहुत मज़ा आएगा. So story is very good, very exciting also. Okay, beta. Take care of yourself. Have a nice day.